Dear NEET 2025 aspirants, welcome to a new video. So yes, in this video, I will give you detailed information about NEET 2025 form fill up. So yes, those candidates who are going to appear NEET 2025, you need to fill your form for 2025. So while you are doing form fill up, you have to remember some of the important points which is uploaded by NTA. So first and the most important point, candidates are advised to fill only one application form and you have to give your own mobile number. You have to give your own mobile number. It is mandatory to provide the mobile number and email of the parent or guardian. Means you have to give your own mobile number और आप आपका पेरेंट्स का भी दे सकते हो. आपका खुद का होना चाहिए और आपका पेरेंट्स का होना चाहिए. जो भी अवेलेबल है वही मोबाइल नंबर दीजिए, जो कि एनटीए तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वही मोबाइल नंबर को आएगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन आप जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि जब आपका फोटो अपलोड कर रहे हो, वो फोटो अपलोड कीजिए जो फोटो आपका रिसेंटली होना चाहिए. मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फोटो विच यू आर गोइंग टू अपलोड it should be recent photograph. Very very important. Signature and left and right thumb impressions and all the certificate before uploading. Means you have to check fast before final submit होने का पहले आप सब लोग, दैट इज आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबको आपको थोड़ा थोड़ा चेक करना होगा कि ये सही है कि ये सही नहीं है. जो कैटेगरी स्टूडेंट है वो आप लोगों को वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को थोड़ा देखना चाहिए, वो थोड़ा सर्च करना चाहिए. देन मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, मोबाइल एंड ईमेल आईडी नीड टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी. मींस आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ओटीपी को थोड़ा वेरीफाई होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. देन कम टू द अनदर पॉइंट, जब भी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो नीट 2025 के लिए, क्या लैंग्वेज चूज करना चाहिए 2025 के लिए. सो एनटीए तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है, candidate can option for a question paper in any one of the following 13 language. You can choose one language for the paper. Means English, Marathi, Hindi, Odia, Assamese, Tamili, Bengali, Telugu, Gujarat, Urdu, Malayalam, Punjabi and Kannada. For example, I am living in Tamil. So I just want to give my paper on Tamili. So yes, if I will choose Tamili, then question will become Tamili plus English. And if a candidate optioning for English, it would be provided test booklet in English only. For example, if you are choosing English only or if you are choosing the language English, then the question paper or the test booklet will come in English only. And if another candidate optioning for Hindi, it would be provided with bilingual test. Means that is booklet English plus Hindi. If someone is choosing Hindi, then question will come in both language Hindi and English. If someone is choosing, that is the regional language, for example someone is choosing Odia, so the question paper will come both Odia and English. It is very very important, you have to remember. That is, if someone is choosing the regional language, question will become both regional language as well as English. Then another point you have to remember, what is the lower age limit shall be. So age limit आपका क्या होना चाहिए, he or she has completed 17 years of age at the time of admission के टाइम से आपका 17 years होना चाहिए. मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ बिफोर 31/12/2008, डिसम्बर 31 पहले होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कैटेगरी. इफ यू आर बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इट डज नॉट मैटर. दैट इज योर बोर्न ऑन बिफोर 31/12/2008, मीन्स डिसम्बर 31 पहले होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट, इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर. You can see that is the upper age limit. There is no upper age limit for 2025. 2025 के लिए कोई भी upper age limit नहीं. Then another point, that is what is the minimum mark you should require for NEET 2025 form fill up. For general category, you must have 50% of mark physics, chemistry and biology. For SC, ST and physical handicap, you must have 40% of mark of physics, chemistry, biology or biotechnology. For example, if you are a student of physics, chemistry or biology or physics, chemistry or biotechnology, you must have 50% mark for general category. You must have 40% mark for SC, ST and physical handicap category. Clear? Then come to the code. So क्या क्या कोड देना चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्या क्या कोड देना चाहिए. So code 1 is important. Those candidates who are appearing in the qualifying examination, means those students who are in 12th standard and they are going to appear NEET for the first time. Means for example, I am a student and I am doing my 12th or plus 2 second year
and I am going to appear NEET 2025 first time. So code 1 will be applicable for me, right? So those candidate whose result is awaited may apply in the test board. He or shall not be eligible for admission to the undergraduate medical course. जो 12 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है वो सब के लिए कोड 1 इंपॉर्टेंट है, कोड 1 देना चाहिए. एंड कोड 2 for the dropout student. So point to be remember here, code 2 it is important for the dropout student. It is important for the dropout student. और जो भी कैंडिडेट कोड 2 चूज कर रहे हो, आप सभी को गैप सर्टिफिकेट चाहिए. बट कब चाहिए? दैट इज आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वहीं पे चाहिए. नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. सो पॉइंट टू रिमेंबर, that is you can choose code 2 if you are a dropout student. Very important. So code 2 is safest code. Anyone can give code 2. If you are a dropout student, you can easily choose the code 2, right? Then code 3 that is a intermediate or a pre-degree examination in science, Indian University Board or other recognition examination in physics chemistry. That is any other intermediate or a pre-degree examination in science. That is BMS, BHMS जो भी कोर्स में कोई अगर कर रहा है तो वो 2025 देना चाहता है वो डायरेक्टली कोड 3 को चूज कर सकता है. लेकिन आप सभी को मैं यही बोलूंगा कोड 2 चूज करो. If you are a dropout student, then you have to choose the option code 2. Very important. So in the next video we will discuss some of the most important points for your NEET 2025 application. So do visit this channel and subscribe this channel. Thank you.